फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है व्हाट इज द शरिया लॉ। चलो पता करते हैं। वैसे मुझे काफी मैं इग्नोर हूँ इस बारे में, तो मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा पता करना कि एग्जैक्टली है क्या। तो वीडियो शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। There was a time when Afghanistan was a modern state. Faith was a private matter, burqas were optional, women and men could travel together. Right next door, Iran was not far behind. It was at par with the Western world. Women could step out without a veil, even meet men at public places. But the Iran and Afghanistan of today are a lot different. Today, hijab is mandatory, Western clothing is frowned upon, clerics dictate societal norms, religious police patrols the streets, civil rights are all but non existent. What happened in these countries? They came under the Sharia law. Hello and welcome to Gravitas Plus. I'm Palki Sharma Upadhyay and I come to you with arguably the most controversial concept in the world, the concept of Sharia. It's back in the news after the Taliban took over Kabul. They plan to rule Afghanistan under the Sharia law, under the Taliban's version of the Sharia law. What does that mean? What will change in Afghanistan? What place does the Sharia have in this day and age? How many people in the world follow it? Why is it so controversial? Why does the world fear it will take Afghanistan further back in time? We've spoken to a lot of scholars and experts to put this report together. We'll try to answer all these questions, starting with the first question: what is the Sharia? To many, the word conjures horrors of hands being cut off, of adulterers being beaten, and women being oppressed. In fact, no religious law has ever had worse press as the Sharia has in recent times. Why is that so? Thanks to the misrepresentation, manipulation, and misuse of the Sharia. By whom? Islamic regimes, politicians, clerics, radicals, terrorists. They've all used the Sharia to rule in the name of God. So coming back to the question, what is the Sharia? Well, there is no clear definition. Different people understand and apply the Sharia in different ways. But if we put the broad concepts together, this is what a definition would sound like. The Sharia is Islam's legal and spiritual system, both divine and philosophical. Divine because it is said to be God's will for humankind. Philosophical because it is based on the human understanding of what that divine will is. In Arabic, the Sharia translates to the clear, well-trodden path to water. The human interpretation of Sharia is called the fiqh, which literally means understanding. Now, these terms are used interchangeably, but they're not the same. Sharia is considered divine, permanent, infallible, but its understanding is human. It's a set of rules put together by Muslim scholars over the centuries. These rules have been drafted and applied to suit those in power. Where do the rules come from? Three sources: the Quran, which is Islam's holy book, the Sunnah, which is basically the deeds of Prophet Muhammad, and the Hadith, the sayings of the Prophet. There's a range of other sources to work out how God wants Muslims to live. But there is no single law book, no definite statute, no set judicial precedent to determine what the Sharia is. It's basically a vast collection of different, often conflicting interpretations. These interpretations gave birth to 5 schools of thought, 5 legal schools of Sharia. And you must know this, there are different kinds of Sharia, you would say. Hanbali, Maliki, Shafi, Hanafi. These 4 belong to Sunni Islam. The 5th is a Shia version of Sharia. It's called Jafri. All 5 of them are named after theologists and jurists, the men who interpreted Islamic texts. Now look at this map. The Hanbali school is the smallest and strictest of them all. Its primary source is the Quran. It is practiced in Saudi Arabia and Qatar. It also has significant followers in these countries. The Maliki school of Sharia relies mostly on independent understanding of the Quran. It is predominantly found in African nations, the whole of West Africa, along with Chad, the Sudan, and Kuwait. The Shafi school of Sharia relies on consensus over understanding of the Quran, and this is where it's followed. East Africa and Southeast Asia, in countries like Somalia, Eritrea, Ethiopia, Lower Egypt, Djibouti, the Maldives, Indonesia, and small communities in Malaysia. Then we have the Hanafi school, the earliest, the most flexible version of the Sharia. It relies both on consensus and independent reasoning. The Hanafi school has the largest number of followers, approximately 1/3 of Muslims worldwide.
They live in Turkey, Jordan, Lebanon, Egypt, Afghanistan, Pakistan, India, and Bangladesh. And then we have the Jafri school of thought, followed Shia. only by Shia Muslims. It is enshrined in the constitution of Iran. It also has a lot of followers in Iraq and small pockets of followers the world over. So we have 5 different versions of the Sharia. How are they different? Not in the fundamentals of faith, but in their practice. There are differences in how they pray, how they resolve legal matters, how they settle marital disputes, how they deliver punishment for certain crimes. And this is understandable because no religion is uniform. But the problem begins when religion is mixed with governance. Many Muslims who embraced the Sharia thought of it as a substitute for the law of the land, and that's where the problem lies. The Sharia was just supposed to be a way of living. It was not meant to be associated with political power. When European colonialism began to spread, the crown and the church came together. The church was used to further the interest of the rulers. The same thing happened in Muslim kingdoms. And while European nations later separated the church from the state, many Islamic countries did not. France, Britain, and other European powers had colonized much of West Asia, Africa, and Asia. When they left, leaders of the newly formed Muslim majority countries faced a dilemma. Should they govern based on previous Islamic values, or should they embrace laws inherited from colonial rule? Well, they chose the Sharia as the basis of their legal justice system. And this gave birth to all kinds of theocracies, hardline and moderate. Countries like Algeria, Libya, Egypt, the Sudan, Syria, Iraq, Oman, Yemen, Pakistan, they all had the Sharia. Even countries which were not colonized by the West adopted the Sharia. In 1932, Saudi Arabia was formed as a theocratic monarchy. 1979, Iran witnessed an Islamic revolution. Until then, Iran was a secular monarchy. After the revolution, the clerics took power. The country became an Islamic republic. Then in 1996, the Taliban seized power in Afghanistan. They made it a terror regime based on the Sharia. What makes this law acceptable in some countries and horrific in others? Its understanding and implementation. Some countries enforce the most discriminatory and patriarchal aspects of the Sharia. They selectively picked certain verses from the Quran and legalized draconian practices like polygamy, triple talaq, genital mutation. They also enforced rules that had little or no basis in Islam. Research shows that most of these punishments were not sanctioned in the Quran. They were not practiced by the Prophet. Yet today, they've been made the highlights of the Sharia. They're being used to dictate daily lives of Muslims the world over. A lot of the followers do not understand this. They just stubbornly uphold ignorant and unjust practices. The biggest victims of this are Muslim women. Does God judge differently based on gender? For many clerics, it does. Despite the fact that women worked and fought alongside the Prophet, they won't tell you this. In some countries, women cannot step out without an abaya or a veil, but men can dress the way they want. Women cannot stand for president, but men can govern for a lifetime. Women cannot choose to have an abortion, but men are allowed to have 4 wives. Women cannot travel without a male guardian. Women cannot drive. Women cannot retain custody of their children after divorce. And they receive half of what is awarded to their brothers in inheritance. The list of restrictions on women in the name of God is appalling. And the Sharia's misuse does not end there. It is cited to justify what they call the conquest mindset, to wage wars in the name of Islam, especially by terror outfits who portray themselves as more faithful than other Muslims. They use religious scholars in their ranks to make finely crafted arguments, to use religion as a pretext to perpetrate violence. They exploit people who have little understanding of Islam. They recruit them as foot soldiers to fight their politically motivated wars. Some join them in the name of faith, some in the name of their land, some for a good paycheck, and some because they're just murderous. But this is not the Sharia. Let me tell you something else. A lot of damage has been done in the name of religion by people from all faiths, by people from all cultures. That's true for the Sharia too. Yet it remains a way of life for 1.8 billion followers of Islam in more than 57 countries. Does that make it acceptable? Who decides? And in which form? Here's what I think. All things, including religion, must evolve with time. If some practices are outdated, they must end. Religious law may not have a place in modern nation states governed by a constitution.
If the Sharia's interpretation and practice clashes with today's way of life and social structures, then perhaps it's time for revision and reflection rather than resentment. Gravitas Plus. तो फ्रेंड्स काफी अच्छा वीडियो बनाया था जिसमें बताया कि कितने डिफरेंट टाइप ऑफ वो हैं इस्लामिक लॉज जो फॉलो करते हैं और अलग अलग एरियाज में अलग अलग उन्होंने इंटरप्रेट किया हुआ है ये शरिया लॉ और उसको यूज कर रहे हैं और काफी भयानक बता रहे थे जैसे बता रहे हैं और ऐसे लग रहा है मोस्टली ये लॉ से किसको हार्म हो रहा है जैसे बोल रहे थे औरतों को कि भैया औरतों के ऊपर इतनी रिस्ट्रिक्शंस डाल दिए इतनी रिस्ट्रिक्शंस कि वही ना बनाया ही मेरे ख्याल से आदमियों ने ये सब करके बोला होगा ये शरिया लॉ है और हम ये करेंगे नहीं, किसी ये औरत दिखा को रहे तो हैं। बिठाया नहीं होगा इस लॉ को बनाने में तो ये जो है रॉन्ग इंटरप्रिटेशन, हाँ रॉन्ग में ही वो बोल रही हूँ वही तो कह रही हूँ कि रॉन्ग इंटरप्रिटेशन किसने की होगी हाँ, वो तो किसी आदमियों ने मिलके की कि भैया ताकि हम वहां पे हमारे अंडर रहें औरतें और हम मजे से वहां पे बैठे तो वही वो बता रहे हैं कि भाई बाहर तक नहीं निकल सकते मुझे तो सबसे ज्यादा शॉकिंग लगा कि आप बिना किसी मेल के अकेले आप कहीं बाहर भी नहीं जा सकते देखो तो सही ये क्या मतलब बाहर जाना है तो पहले आप किसी आदमी को बोलो हमारे साथ चलो अगर ऐसा नहीं किया तो आपको पनिश कर देंगे पूरा बुरखे में पूरा कवर होके जाओ और कितना कुछ उन्होंने बताया कि अगर डाइवोर्स हो जाए तो आपको अपना आपका बच्चा नहीं मिलेगा यहाँ पे आप जो आदमी है वो कितनी 3 या 4 शादियां कर सकते हैं तो बिल्कुल ना इंसाफी है तो टोटली रॉन्ग है और देखिए बड़ा दुख होता है कि आजकल के जमाने में ये भी कह रहे हैं कि आजकल के जमाने में कौन होता है ये आपने जो भी किया है उसको चेंज करना है टाइम के साथ साथ सबको चेंज होके उसको बेटर करने की जरूरत होती है अब देखो भाई आजकल के जमाने में हैं ऐसी जगहें जहाँ पे कर रहे हैं इस टाइप का कि आप वेस्टर्न कपड़े नहीं पहन सकते आपको पूरा कवर्ड रहना होगा ये होगा वो होगा आदमी कुछ भी पहन सकते हैं जी कमाल है राइट। तो रॉन्ग इंटरप्रिटेशन शारिया में यही है उन्होंने कुछ बातें नहीं बताई कि थोड़ी कंट्रोवर्सी ना हो जाए मगर लोगों को पता है कि रॉन्ग इंटरप्रिटेशन में जो हार्श पनिशमेंट्स हैं कि आपको अगर आप चोरी करते हैं तो आपके हाथ काट देंगे आपको बीटिंग होगी कोड़े पड़ेंगे आपको स्टोन टू डेथ कर देंगे तो वो सब चीज़ें वो रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है वही मेन पॉइंट है कि इशू जो है ये था कि आप गवर्नेंस के साथ रिलीजन मिक्स नहीं कर सकते जैसे पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में भी हुआ था कि चर्च एक समय पे पूरी कोशिश कर रहा था कि चर्च कंट्रोल करे फिर अल्टीमेटली किंग्स ने उसको ख़त्म कर लिया धीरे धीरे किंग्स पहले आगे बढ़े फिर किंग्स ने धीरे धीरे अटैक करके बोला नहीं चर्च हमारे अंडर आएगा उसके बाद चर्च को बाय बाय कि तुम अलग हो जाओ तुम अपना करो मेरे रूल अलग होंगे तो पूरी यूरोप की हिस्ट्री में यही है कैसे चर्च के पास पैसा होता था तो कैसे उसने कब्जा करने की कोशिश की फिर कैसे किंग्स ने फाइट बैक किया और उनको सेपरेट किया तो मेरे ख्याल से यही पॉइंट है मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए और इंटरप्रिटेशन जो है वो जो है हर इंसान का अपना जैसे उन्होंने 5 तरीके दिखाए इंटरप्रेट करने के अब जो है आप अगर कोई ऐसा इंटरप्रिटेशन ले ले जो गवर्नेंस में है जो बुरे लोगों ने इंटरप्रेट किया तो ये प्रॉब्लम आ रही है तो तभी लोग कह रहे हैं कि अफगानिस्तान में ये इशू है क्योंकि उनकी इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं है तालिबान तो यही कह रहा है कि हम नए तालिबान इंटरप्रेट करेंगे ठीक हो पता चलेगा कि क्या करते हैं मगर प्रीवियस बिहेवियर से पता चलता है कि उनका वर्स इंटरप्रिटेशन है शरिया का मैं तो उसको भी सुन के शॉक हो गई कि उनका एक रिलीजन पुलिस होती है लोगों को चेक करने के लिए नॉर्मल पुलिस के एक रिलीजन वाली पुलिस कि आपने वो जो भी फॉलो करना है कपड़े जो पहनने हैं अकेले तो नहीं निकले शायद ऐसी चीजें देखते होंगे और अगर आपने इनमें से कोई चीज ब्रेक कर दी तो पकड़ के फिर जो भी पनिशमेंट होती हुई देते होंगे बाप रे अरे बाप रे हम तो थैंक करना चाहिए हमें कि भाई हम ऐसी एक कंट्री में पैदा हुए ऐसी कंट्री में उसके बाद आए उस टाइप की लाइफ हमने नहीं इन्होंने एक बहुत अच्छा पॉइंट कहा था कि जितने भी लोग अनएजुकेटेड हैं जिनको खुद अपने रिलीजन का नहीं पता उनको इन्होंने अपने कब्जे में कर लिया वही कंट्रोल में कर अगर जो लोग अनपढ़ हैं जिन्होंने नहीं पढ़ी अपनी रिलीजियस बुक कुरान नहीं पढ़ी है उन्हीं को वो ऐसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं क्योंकि जो पढ़ा लिखा इंसान होगा बोलेगा भाई मैंने तो कुरान पढ़ी है इसमें तो ऐसा कुछ नहीं लिखा तो तुम मुझे क्या बता रहे हो राइट तभी तो वो औरतों को पढ़ने नहीं दे रहे तभी तो पढ़ाइयां नहीं करने दे रहे कि उससे किससे बहस करेंगे और या जो अपना वर्जन देंगे वो ऐसा वर्जन होगा जो उन्हीं के हिसाब से है तो मेरे ख्याल से पॉइंट यही है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको ब्रेन वॉश करना आसान नहीं होता चलो फ्रेंड्स चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को
हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।